Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's understand the exercise of chapter 7, that is getting to know plants. This chapter is in biology. Here comes the first question. What you have to do in the exercise first question, correct the following statement and rewrite them in your notebook. Means you have to observe the statements. If it is correct, then it's okay, you have to write true. But if it is false, then you have to correct it and rewrite it. So let's start with the first one. Stem absorbs water and minerals from the soil. Is it correct? Exactly, it's not correct because this is the function of the root. As you know, root system is growing under the ground. So that's why from the soil the roots are absorbing water and minerals. Okay, so over here stem nahi aayega, root aayega. So answer you have to write like in a manner, rewrite it. Roots absorb water and minerals from the soil. Okay, ये था first. Second, leaves hold the plant upright. Can you imagine that leaves can hold this huge plant upright? No, it's not. Okay, so answer is stem holds the plant upright. मतलब stem का काम है पूरे plant को एक steady position में सीधे सीधे खड़े रखना. Okay. Next one is roots conduct water to the leaves. Roots conduct water to the leaves. Means roots है वो पानी को leaves तक पहुंचाता है. Is it correct? No. Answer should be stem. Because stem's main function is to transportation. मैंने आपको बोला था stem का काम zomato जैसा है. That zomato's main function is to provide you food and drinks from the source to the destination. Okay, वैसे ही stem का काम है to transport the water from the roots to the leaves and food from the leaves to the roots. So answer should be stem. Next one is the number of petals and sepal in a flower is always equal. What they mean that whatever the number of sepals are there, that is equal to the number of petals. Now this is not correct. In some flower it can be correct, but in other flowers we cannot compulsory tell that yes, number of petals is equal to number of sepal. It is not correct for all flowers. So we will write like in a manner, not necessarily. The number of petals and sepal in a flower may be or equal or different. Next one is if the sepal of a flower are joined together, its petals are also joined together. Okay, मतलब अगर sepals है वो जुड़ी हुई है तो पेटल्स भी जुड़ी हुई हो. इज इट नेसेसरी? नो. ओके, जैसे कि धतूरा जिसको हम बोलते हैं बेल फ्लावर बोलते हैं. सो बेल फ्लावर के अंदर सेपल्स एंड पेटल्स दोनों जॉइंट है, लेकिन रोज में क्या है? ओके, रोज में सेपल्स भी अलग है एज वेल पेटल्स भी अलग है. सो वी कैन राइट दैट नॉट नेसेसरीली. If the sepals of a flower are joined together, then its petal may or may not be joined together. Or like in a manner you can write, if the sepal of a flower are joined together, then its petal are not necessarily joined together. Next one is, if the plant of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. Okay, petal के साथ मतलब अगर petals है वो flowers के साथ joined है तो pistil भी उसके साथ joined ही होगी. तो उसमें भी हम लिख सकते हैं कि not necessarily. Now next one is draw a leaf, a taproot and a flower. So a leaf जिसके अंदर आपको क्या करना है, you have to draw the diagram. Okay, इसमें आपको drawing की practice हो जाएगी. You have to draw the leaf and one by one you have to label it. That is axil, the angle between the branch and the leaves. Petiole means what? Small stalk which attach the leaves to the branch. Next one is lamina. The lamina's main function, the broad part of the leaf is known as lamina. Next one is, that is midrib.
big central vein inside the leaf is known as what? Midrib. Next one is veins. So from the midrib, you can see that channel-like structure comes out, which is known as veins. Next one is tip. Tip means the pointed end of the leaf is known as tip. Moving to the next, a taproot and a flower. So taproot means what? उसमें मेन रूट होता है एक, ओके, और उसमें से छोटे छोटे रूट्स है वो निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स. So you have to draw it like in a manner. Instead of this, you can draw the carrot plant also. आप carrot plant भी draw कर सकते हो and mention कर सकते हो that this is the main root and this is the lateral roots. And नीचे मेंशन करना चाहिए आप कौन सा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज टैप रूट, नीचे या तो ऊपर. नेक्स्ट वन इज फ्लावर. So in the flower you can see that we understood in the structure of flower that flowers are having mainly two types, that is inner part of the flower and outer part of the flower. We have to mention all the labels. First start with the outermost. तो उसमें सिर्फ दो है, this is the sepal and this is the petal. बट इनर के अंदर आपको मेंशन करना है. सो फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमेन. ओके, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट. पोलन ग्रेन्स के बारे में आप लोग 7 में पढ़ोगे, सो इसलिए अगर आप पोलन ग्रेन्स नहीं लिख रहे हो देन इट्स ओके. ओके, बट याद रह रहा है एंड लिख रहे हो देन इट्स एक्सीलेंट. Next one is the female reproductive part named as pistil. So pistil consisting of the upper part which is stigma, the tubular structure which is style, okay, the outer swollen structure which is ovary, okay, and inside this is the ovule. Right now if you are not mentioning ovule then it's okay, but in exam you must have to mention it. Okay, ovule आपको mention करना ही है. Moving to the next, that is number 3. Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem? Write its name. In which category would you classify it? Now, as you know that two plants can be having weak stem. Either it is a creeper or it is a climber. Okay. So which has a long but weak stem. Okay. So creepers की long stem नहीं होती है, वो पूरे ground के ऊपर spread होते हैं. So over here they are talking about climbers. So answer will be like this way, that yes, we can find gourd plant, pea plant which needs support to climb and it is categorized in a climber. ओके, यहाँ पे आपको हिंट पहले से दे रही थी, दे दी गई थी, दैट इज अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम. ओके, अगर फ्रेजाइल एंड वीक स्टेम लिखते या फिर ऐसा लिखते कि विच स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, सो आपको पता चल जाता कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रीपर्स. ओके, सो आप सिर्फ गर्ड प्लांट एंड पी प्लांट नहीं लिख सकते हो, आप क्लाइंबर के कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, लाइक ग्रेप है, देन मनी प्लांट है, ओके, बॉटल गर्ड है, बिटर गर्ड है, ओके, ये कोई भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम. तो फंक्शन स्टेम्स के बहुत सारे हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज हेल्प टू स्टैंड अपराइट. सेकेंड वन इज इट ट्रांसपोर्ट द वाटर from the roots to rest of all plant parts, and third में लिखेंगे food from the leaves to rest of all plant parts, right? Okay, and some exceptional cases are also there, that some plants are having green stem so that they can perform photosynthesis process. So depend करता है कि कितने मार्क्स में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स है वो लिखना है. एंड मैं हमेशा आपको बोलती आ रही हूँ, यू मस्ट हैव टू राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स सो दैट अगर एक आध गलत हो तो भी दूसरा पॉइंट काउंट करके आपके मार्क्स है वो आ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. कौन से लीव्स के रेटिकुलेट वेनेशन होगी. सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन द रेटिकुलेट वेनेशन एंड द रूट सिस्टम. सो रेटिकुलेट वेनेशन में कौन देख लेना पड़ेगा एग्जांपल्स के अंदर कि गिवन है व्हीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर एंड चाइना रोज. अब गेहूं कैसे होता है, ऑलमोस्ट ग्रास जैसे दिखते हैं. ओके,
तुलसी, तुलसी को जब आप नजदीक से देखोगे तो विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी? यस, नेट लाइक स्ट्रक्चर. मेज में, मेज मतलब क्या? मकई. ओके, सो आप जब मकई को जब छीलते हो तो मकई के ऊपर जो लीफ है उसके ऊपर क्या रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है? नो, सो वो नहीं आएगा. देन ग्रास, then coriander and china. Let's see the answer. So reticulate venation is found in the leaves of tulsi, then coriander and china rose. बाकी के सारे हैं वो पैरेलल लीफ वेनेशन के एग्जांपल्स हैं. Next question is, if a plant has fibrous root, what type of venation do its leaf likely to have? मतलब अगर कोई प्लांट का फाइबरियस रूट है तो उसका कौन सा लीफ वेनेशन होगा? As I taught you the relationship between the root system and the leaf venation. So fibrous हो तो कौन सा आएगा? Exactly, parallel आएगा. So parallel venation is found in the leaves of the plant which has fibrous root. Next one is, if a plant has leaf with reticulate venation. ऊपर वाला क्वेश्चन है उससे एकदम उल्टा. So what kind of roots will it have? Okay, यहाँ पे venation दिया है और root guess करना है. So reticulate venation is having which kind of root? Yes, exactly, tap root, जिसमें one main root होता है and उसमें से छोटे छोटे जो lateral roots है वो निकल के आते हैं. Now moving to the next question. So here comes the question that is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? Okay, so for that let me remind you that we had done one activity. Okay, that was surprise activity for you, that you have to collect various leaves and put it under the paper. Okay, and with the help of a pastel color or coloring pencils you have to just find out the impression. You have to just keep the impression, make the impression on the paper, and through that you can understand the leaf venation. Yes or not? We had done this activity, right? Okay, so through this activity we can also guess that which root is that plant has. Okay, so suppose for example, for that you have to write the steps which is used for doing this activity. That first of all we have to collect the different paper, different leaves. Okay, put it under the paper and slowly and gradually with the help of coloring pencil tip or wax crayons you have to just rub it on the paper so you can guess, you can got the impression on the paper. If the leaf is having lots of net like structure, then it has reticulate leaf venation. But if the lines are same and parallel, then you can consider as a parallel leaf venation. Okay, so we can consider the relationship also, that if the reticulate leaf venation, then the root will be tapped, and if the fibrous root is there, then the root, if the parallel venation is there, then the root will be fibrous. Okay. Next one is write the names of the parts of a flower. So flowers are having types, okay, inner part and outer. So उसके सारे नाम लिख लेने के. That is petals, sepals, anthers, stigma, style. Now androecium and gynoecium. These things you will learn in the 9th standard and 10th standard. Okay, so अभी के लिए सिर्फ आप नाम याद रखो. And last but not the least is filament. So these are the names of the parts of the flower. In the exam, if you are not writing androecium and gynoecium, then it's okay. But आपको देखना पड़ेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. So उसके अकॉर्डिंग, because each जो भी नाम है उसका हाफ मार्क है. So overall 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. Next question is, from the following plants, which of them have flowers? We have categories. So grass के ऊपर कभी फ्लावर आता है? नहीं. मेज के ऊपर, मेज मतलब मकई, आता है? नो. वीट के ऊपर? नो. ओके. चिली के ऊपर? यस आता है. ओके, व्हाइट कलर के होते हैं. टोमेटो के ऊपर? यस आते हैं, येलोइश व्हाइट होते हैं.
तुलसी के ऊपर आते हैं, यस, देन पीपल के ऊपर नहीं, ओके, सो लाइक दिस वे हमें उसको कैटेगराइज करना है। सो ओवरऑल किस किस के ऊपर आएंगे, तो कि भाई चिली के ऊपर, देन टोमेटो, मोस्टली जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है ना आप उसके नाम लिख सकते हो, ये एक शॉर्टकट में आपको दिखा रही हूँ। ओके, तुलसी के भी छोटे छोटे बीज आते हैं, सो उसके ऊपर भी फ्लावर होते हैं। ओके, देन मैंगो होते हैं व्हाइट कलर के, जामुन के ऊपर भी होते हैं, गुआवा के ऊपर भी व्हाइट कलर के आते हैं, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट के ऊपर रेड कलर के आते हैं, पपाया, बनाना, लेमन। सो मोस्टली मैंने आपने देखा कि मोस्टली जो भी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके सारे नाम्स है जिसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, बिकॉज फ्लावर्स जब आएंगे तभी तो उसमें से आपको फ्रूट मिलेंगे। ओके, ये प्रोसेस कैसे होते हैं दैट वी विल लर्न इन 7th स्टैंडर्ड। ओके, so this is the shortcut for you. Next question is, name the part of the plant which produce its food. Name this process. मतलब कौन सा प्लांट पार्ट है जो फूड बनाने मतलब फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज द which part of the plant is considered as a kitchen of the plant? Yes, exactly, that is leaves. और वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? That is photosynthesis process. The process by which plants make food on their own, that process is known as photosynthesis process. So last two questions, that is first one, in which part of a flower you are likely to find the ovary? So फ्लावर के कौन से पार्ट में आपको ओवरी है वो मिलती है? सो फर्स्ट थिंग, दैट ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द flower. Okay, so first you have to write like this, that the ovary is present in the pistil of the flower. Ovary is present in the pistil of the flower. Last but not the least, name two flowers each with joined and separated sepals. मतलब फ्लावर्स के नाम देने हैं जिसके अंदर सेपल्स है वो जॉइंड है एंड सेपरेटेड है. सो फर्स्ट वन इज दैट joined sepal example, so china rose and lotus, tomato, cotton, even you can write bell flowers matlab dhatura, so that are considered which they are having joined sepals. And the flowers which do not have joined sepal, or I can say that which have separated sepals, examples are rose, jasmine, uh, then sunflower, mustard, etc. So that's it about the exercise. In the next video, we will start a recapitulation of next chapter, and soon I will going to send you the PDF of this chapter 7. So please prepare for it and hope you will going to write in the notebook. Till then, just stay happy. Have a nice day. Bye.